We are on the recording. Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum. Here, today we will solve question number 4 of exercise 6C. तूने बुफर निकाल के दिया है। Page number 176. Page number 176. Now, class, in maths book 2, we will solve question number 4 of exercise 6C. Page number 176. Question number 4 we have given root. Very easy question, class. Root ax square, this is question, ax square minus b is equal to c, okay, is equal to c. And then value we have given, a is equal to, we will find out the value of x. This is question, and second part we have to find out the value of x. ये हमें find out करना है. A we have given 2, B we have given 7, and C we have given 5. Okay, so put the values of A, B and C and find out the value of X. Okay, class, now put the value. I am going to put the value, putting the value A. In place of A we will write 2 x square as it is because it's unknown, minus b. Class, b की जगह पर in place of b we will write, just a second, in place of b we will write 7 is equal to c. In place of c we will put 5. Okay, I am putting the values of a variable. हम variable की values put कर रहे हैं. So now, class, the 2x square minus 7 is bound with root. आप ये देख सकते हैं, ये सब जो है रूट्स में बाउंड हुए हैं. ओके, प्लीज ऑल स्टूडेंट्स कम ऑन द स्क्रीन. सो वी विल सॉल्व इट स्क्वेयरिंग बोथ साइड. हम इसको क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड सॉल्व करेंगे. क्यों? बिकॉज हमें वी विल हैव टू गेट रिड ऑफ द टर्म्स विद द रूट. हमें इस रूट को खत्म करना है. हाउ? वी विल डू द स्क्वेयरिंग बोथ साइड. सो it become 2x square minus 7 and root, as you can see, and bracket square. This is squaring both side, means taking power 2 on both sides. Whenever we write SBS, it means squaring both side. Squaring both side means power 2 on both sides. So now square cancel from root. इससे क्या होता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. ओके, बिकॉज रूट का मतलब होता है पावर 1/2. 2 कैंसिल फ्रॉम 1/2. स्क्वायर से रूट कैंसिल. नाउ this 2x square minus 7 is free from square root. अब ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया इसके ऊपर से. एंड क्लास 5 पावर 2. 5 power 2 means 5 5s are 25. Okay, power 2 means 5 5s are 25. Now class, possibility of here simplification. Here we will shift minus 7 on right hand side. It become minus 7 को हम दूसरी तरफ shift कर देंगे for the simplification. Very easy question. Try to understand. If you have any confusion, ask me at the end of question. It becomes 7. Now class, add the numbers and tell me 25 plus 7 क्या आंसर आएगा? Yes, 32. tell me, Alima, what are you saying? 32. 32, right? क्या आंसर होगा इसका? 32 होगा. Okay, and then class, 25 plus 7 32, and then हम क्या ये सही सॉल्व कर रहे हैं? Let me check. Yes, we are doing right. And then class, अब हम क्या करेंगे,
हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए, हमें 32 2 तो नहीं चाहिए, 2x² के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इज अटैचिंग हियर विद मल्टीप्लिकेशन साइन। ये देखिए अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस, एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 12 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 16, x² is equal to 16. Okay, now class we want the value of x, not a x². हमें x की वैल्यू चाहिए, x² की नहीं चाहिए। So finding the value of finish the power of x, we will take square root on both side. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। Now student you can see that square cancel from root as I told you, and square root of 16 is 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4. 4 is the square root of 16, and finally we got the value of x. Class, see the question, and if you have any confusion, ask with me. Is there any question, class? No? No. Okay, class. Next question number 7 we have. Question number, very easy question. Question number 7 consists of 2 parts. First part I will solve and second part I am giving you as a homework. Okay, पहला part मैं solve करूंगी, दूसरा part आप खुद करेंगे. Now okay, I am solving part B. मैं part B solve कर रही हूँ, आपने part A solve करना है. Okay, I am solving part B and part A you will solve. Okay, part question you have given, A is equal to root 3b plus c upon b minus c. B minus c, and you will find the value of, आपको find out करना है c को, and value of c को find out करेंगे. Whereas a you have given 4, comma b you have given 9. Okay, class. Now we will put the values according to given condition. A we have given 4. I am putting the values in the question. Under root 3 we will write as it is because it is given in question. In place of b we will write 4. हम b की जगह पर क्या लिखेंगे, 4, and then plus c and upon b minus c, 4 minus c. C is written, C will be written as it is because अब आप क्या करेंगे, इसको हम as it is लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, C unknown है. And then 4 is equal to square root 3 4 is 12 plus C and 4 minus C. Now class, there is no possibility to simplify the question. अब ये solve नहीं हो सकता. We cannot cancel C from C because signs are involved between the terms. So there is only possibility to take squaring both sides. अब ये simplify नहीं हो सकते, ये cancel नहीं हो सकते क्योंकि terms के साथ sign भी arrange है, तो हम squaring both side करेंगे, right? It become 4 square. Squaring both sides mean taking power 2 on both sides. Now it become 12 plus c, we will write as it is, upon 4 minus c. 4 minus c and whole square we will write as it is. Square cancel from root. Okay, because always remember when we have a square and root, square mean power 2 and root cancel from each other, and 4 square mean 4 4s are
16 is equal to, now class, terms are free from square root, so we will write 12 plus c upon 4 minus c. Is there any confusion? यहाँ तक कोई problem? Don't write anything on the screen, otherwise I'll remove you. Yes, class. No, Yes. no problem. So now class, we will we will shift 4 minus c on right hand, left hand side. Like, अब हम इसको वहाँ shift कर देंगे. For simplification, for finding the value of c, I am shifting denominator on left hand side. It will come in it will multiply with 16. Class, don't write anything on the screen, otherwise I will remove. And come every student on the screen. Screen पे appear हो जाए फौरन, जल्दी से. Hurry up, Abdul Kareem, Alisha, Shayan. Hurry up, class. We don't have time. Okay, now 12 plus C. Please take your studies seriously, students. Okay, and then 64 plus 12 become minus 12 is equal to 16. ये यहाँ पे ये उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा. On right hand side we will shift 16. It come with plus sign like this. 64 minus 12. What should be the answer? 64 minus 12. It become 53. No, 4 minus 2, 52. 52. Yes. And then 17 C. Yes, class. Divide 7 by 17 by 63. 63, 70. Let me check the value of B. B is equal to 7. B is equal to 9. Oh, class, there is a mistake. हमने B की place पर 9 put करना है, ना के 4. Here we have 9 values. Okay, 3 9s are 27. Sorry, class, it's a 9. 3 9s are 27. Okay. Okay. Now, it's not a 12, it's a 27, because 3 multiplied by 9 become 27. It's a 27, it's not a 12 here. So in place of y, you will write 9 like this. Correct it. And 9 minus c. And then please multiply 16 by 24, 16 by 9. Wait a minute. Let me correct the question from here. I'm again तीनों steps को multiply करूँगी. And then class. 144. Okay, who is giving me the answer? Shayan. Very good, Shayan. Okay, let me correct the values. Wait a minute. 9 minus c. Okay, now tell me 16 9s are 144. 144. Okay, and minus 16 c's are 16c. 16C. We are multiplying 16 with whole bracket. It's not a 12, it's a 27. Okay, ये 12 नहीं है, ये 27 है, ये by mistake हो गया था. And then we will write 27 plus c as it is. And then class, arrange the values, same term we will shift according to like terms, and it become minus 27 plus 7. 27 क्या हो जाएगा? Minus when we shift it on right left hand side. और Plus. अब यहाँ पे minus 16 क्या हो जाएगा? Plus 16. निकल रहा है बाहर. क्लास माइनस सब्ट्रैक्ट करवाइए जरा आप 124 को 27 से. सब्ट्रैक्ट 127 फ्रॉम 144. 117. 117. Okay, 117 is equal to 17c. Okay, and then class divide 117 by 17. अब आप इसको 17 से divide कर दीजिए and then tell me the answer.
डिवाइड 117 बाय 17, 17 से डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आएगा? डिवाइड 117 बाय 17. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी. जब आप 17 को उससे आंसर को डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा. डन? एनी कंफ्यूजन क्लास? हाँ मिस. Okay, now let's solve another question. Question number 8. We have question number 8, 7 part A. You will solve by yourself. Question number 6. You have given A upon, very easy and very important question of the exercise. A upon A plus 2 is equal to 3 upon 5. ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट? अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे. ओके, बिकॉज यहाँ पे Yes. एलसीएम नहीं हो सकता, यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता. देयर इज क्रॉस मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज. लाइक वी विल राइट क्रॉस मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज व्हेन वी हैव. अब देखिए आप, दिस इज वन टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म. सो देयर इज equality sign between the terms, so we will cross multiply. How? Let's see. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय ए एंड 3 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 2, लाइक दिस. Plus 2, 2. right class? Now Yes. a 5s are 5a 5A. is equal to 3a's are 3A plus 6. 3A plus 6. very good. Now class, do you have an idea how to solve? And next step क्या होगा? What should be the next step? We will shift plus 3a on left hand side. अब आप क्या करेंगे? Like term Minus 3A. minus 3A. minus 3a is equal to, we will write 6 on right hand side because there is no another like term of 6. Constant कोई और नहीं है. 5 minus 3 become 2a 2A. is equal to 6. now class 2 is multiplying with a and it cancel the 6, like 2 ones are 2 and 2 threes are 6. 6. So a is equal to 3 is the answer of part A. Okay, we have solved it. Yes. Now class, question number B. Question B we have, it's a very easy question, so you can do it by yourself also. B minus 2 is equal to 2 upon B minus 1. 2 upon B minus 1. You can see that the terms have a equality sign in the middle. We will cross multiply it. Means 1 multiply by, अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है? मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है एंड ये लाइक b minus 1. Okay, and 2 is multiplying with e. B minus 2. Very good. And when we multiply 1 with the bracket, answer will be same. जब हम 1 से किसी भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर विल बी सेम, लाइक 1b is a 1b and 1 1s are 1. Okay, when we open the bracket with 2, 2b is a 2B. 2b minus 4. 2 2s are Minus 4. very good. Now class, Minus 4. here we don't have any number, it's mean coefficient is 1. So like term we will arrange minus 1 we will write on left hand as it is, and minus 4 यहाँ आके क्या हो जाएगा? Here it become plus 4 is equal to, we will write 2b as it is and plus 1b come in right hand side, it come with minus sign. It come with minus sign. यहाँ के sign minus plus minus and 2 minus 1 become 1b. So final answer of the question is 3. E is equal to 3. 1. Not a 1, it's a 3. Is there any question class?
Okay, done. So now let's see part C. Let's solve part C. Part C को solve करेंगे. So let me remove the part A from here. Part C is a little bit. There is a little bit of difference in part C because the minus sign is involving in part C. You don't need to worry about minus sign. So let's see part. Next part we have 4 upon C plus 3. C plus 3 minus 4 upon C plus 2. Okay, this is our question, is equal to 0. Okay, class, what we do? Don't need to worry about it. We will shift this term on right hand side. हम इसको उधर ले जाएंगे. Like this, 4 upon C plus 3 we will write as it is. अब जब हम इसको हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इट बिकम प्लस सी. अब ये जो पूरी टर्म है ये उधर जाके क्या हो गई? प्लस सी प्लस. डोंट मेक नॉइस क्लास, शोर नहीं करें. लिसन टू मी क्लास. ये देखिए, ये इधर माइनस था, उधर जाकर क्या हो गया? प्लस हो गया. इन दैट वे यू कैन डू इट वेरी इजी. नाउ अब क्या करेंगे हम क्लास? व्हाट शुड वी डू? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई का. Cross multiply. Yes. Just a second. Let me make a boundary of the questions. Okay. Cross multiply. 4 will be multiplied by C plus 2 2. is equal to, on right hand side there is also constant number 4, C plus 3. C plus 3. Okay. And then Yes. open the bracket, simplify the terms. 4 C's are 4C plus 4 plus 8. 8. And then 4 C's are 4 C. 4C plus 12. Very good. 12. Now class, 12. arrange the like terms on one side and constant term on another side. Like this. 4C are same on both sides. It becomes, when we shift it, Minus. 4C, ये आ जाएगा. Very good. Minus 4C is equal to 12. We will write as it is. Now it become plus 8 into minus 8. Minus 8. Because we are arranging the terms. So now plus 4C cancel from plus 4C minus 4C. ये दोनों cancel हो गए because same terms, opposite sign. So now class, Yes. it becomes 0 is equal. अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह करेंगे. ओके Yes. ओके, 4. सेम था. बट Yes. अगर यहाँ पर if I, अच्छा मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर रही हूँ. आई एम गिविंग इट 3. अब अगर मैं यहाँ पे 3 दे दूँ आपको तो फिर क्या होगा? लेट्स सी व्हाट हैपन. यहाँ पर अब मैं नंबर चेंज कर रही हूँ. सो आंसर विल बिकम, इफ आई चेंज द नंबर. अब अगर यहाँ पे हम नंबर चेंज करेंगे, लेट्स सपोज आई एम गिविंग इट 3. So here it becomes 3. It become 3 and then equal to. Okay now class. अब बताइए 4C is 4C, 3C is 3, 3C and 3 3s are 9. 9. Then class 4C Yes. minus, Minus 3C very good, is equal to plus 9. minus Minus 8. 4 minus 8 become 1 C बचेगा. is equal to 9 minus 8 1. 1. So we got the value of C. C का आंसर हमें मिल चुका है. इसके इक्वल है 1. Done class. Yes, miss. Okay. Yes, miss. Yes. Students, listen to me. Part F I am going to solve. Part F. Before part F, अब हम part F के बजाय पहले दूसरा solve करते हैं. I have question part E. Part E में जो हमें given है वो है इस this question is quite different. 6 upon F minus
10/3f. This is quite different and is equal to 2. अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है. इक्वल टू के बाद भी एक टर्म है. देयर इज ऑल्सो टर्म is present in after equality and minus sign is involving. अब ये सॉल्व होगा एलसीएम के थ्रू. किसके थ्रू होगा? एलसीएम के थ्रू. हाउ टू सॉल्व? लेट्स सी. क्लास अब आप यहाँ पे देखिए f and 3f. डिनोमिनेटर में हमारे पास f and 3f है. इसका एलसीएम आएगा. f इज कॉमन. f कॉमन है एज इट इज. Yes. 1 and 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आंसर? 3. 3. क्योंकि 3 कॉमन है. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3f मल्टीप्लाई बाय 6. 3 मल्टीप्लाई. अब देखिए f तो कॉमन था तो f एज इट इज आएगा. हम f नहीं करेंगे. लेकिन 3 कॉमन नहीं था तो 3 6 18. 3 6 18. 1 के टेबल में 3 कब आता है? 3 माइनस 10. ये दोनों सेम है ना. हियर डिनोमिनेटर्स आर सेम सो अपर टर्म्स हम एज इट इज लिख देंगे. is equal to 2. LCM method I have already many times I have told you. 18 minus 10 become 8 upon 3f is equal to 2. Now cross multiplication is involving here. अब आप cross multiply कर दें. 8 is equal to 3 2s are 6f and then class f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. एंड देन इट बिकम 2 4s are 8. 2 4s are 8. 2 3s are 6. 6. So final answer of the f is 4/3. 4/3. Done class? Yes, miss. Okay. Yes. Last question of the class. अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का. उसके बाद हम एंड करेंगे. 5/6h. This is last question. Plus 7/h. 6/7h. Minus 9/14h is equal to 4. Yes class. First we will take the LCM of 7 and 14. 5/6 को हम as it is लिखेंगे क्योंकि ये as it is इसलिए लिखेंगे. अभी हम इसको बाद में इन्वॉल्व करेंगे. ओके. प्लस 14 और 7 का LCM ले लेते हैं तो आंसर आएगा 14 क्योंकि 7 के टेबल में 14 आता है. H is common so we will write it as it is. And then टेबल 7 के टेबल में 14 कब आता है? 2 6 12. माइनस h इज कॉमन मीन्स 7 के टेबल में 14 कब आता है? 2 टाइम. 2 6 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 12. 14 के टेबल में 14 और h इज कॉमन, दोनों सेम है तो वी विल राइट एज इट इज. एंड देन क्लास अब यहाँ पर हम 6h और 14h का एलसीएम लेंगे. h तो कॉमन ही आएगा. 6 और 14 का एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा? 2 3s are 6. 2 7s 2 3s are are 6. 2 7s are 14. 14. 3 1s are 3, comma 7 as it is. It's a comma, it's not a 17, okay? And 7 Yes. 1s are 7. 7. So class, here we have 2 3s are 6, 6 7s are 42. इन दोनों का आंसर, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते लेकिन ये दोनों नहीं सॉरी ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते बट दे आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 and 7. So अब हम क्या करेंगे? They are 42. 42h. 42 6 के टेबल में कब आता है? How many time 42 come? It comes 6 7s are 42. 7 5s are 35. H is common so we don't write. 12 minus 9. 12 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा आंसर? 3. और 14 के टेबल में 42 कब आता है? 14 3s are 42.
No, 3 4 the 12, 3 1 the 3, yes. 14 के टेबल में 42 आता है 3 टाइम, 3 3 is 9 इज इक्वल टू 4. क्लास यहाँ पे हमने ये कैसे सॉल्व किया? 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो 3 बचे थे, और 14 के टेबल में 42 कब आता है? 3 3 is 9. 35 plus 9 become 44 upon 42h is equal to 4. Yes class. Next क्या होगा? It will solve it. 2 2s are 4 and 2 2s are 4. Don't write anything on the 2 screen. 1. 2 ones are 2. Now class, cross multiply the values. It becomes 22. Don't write anything on the screen class. 4 21s are h. 4 ones are 4. 4 twos are 8. Means 82, 84 h. I'm crossing out the values. 4 ones are 4. 4 twos are 8. And then class, 22 divided by 84 upon h is equal to h. Okay, simplified the terms. 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 fours are 8, 2 twos are 4. There is no possibility for further simplification. We will write as it is, 11 upon 42. Done class? Yes. So end of the class, I am taking your attendance. Who is present today? Abdul Kareem, Present. Halima, Shayan, Present. and Alisha Muhammad Kashir and Subhan. Okay. अब्दुल करीम और अहमद एक साथ है. Yes class. अब्दुल करीम और अहमद एक साथ है. Ahmed Raza is present. Abdul Kareem, Ahmed Raza Yes, आपके yes. साथ है? Okay. Ahmed Raza is also present. Okay. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.